Hello everyone, welcome to the Commerce Achiever platform. With today's session, we are going to start our new topic that is a forfeiture of share, and we will discuss in both the language Hindi and English. With today's session, we will understand completely theoretical knowledge about the forfeiture, and I hope you have believed so far that even in case of a numerical questions, theoretical understanding is very important and it's very vital. So hope you people are gathering a great information from here. Let's begin with the forfeiture of share. तो आज आपका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है. हम दोनों ही लैंग्वेज में आपसे डिस्कशन करेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बातें करेंगे आपसे. आज के सेशन में हम फॉरफीचर ऑफ शेयर से रिलेटेड जो है नॉलेज गेन करेंगे, उनकी जर्नल एंट्रीज भी समझेंगे फॉरफीचर से रिलेटेड. तो मेरा ये बिलीव है कि अब तक आपको ये कॉन्फिडेंस आ चुका होगा कि हम अगर न्यूमेरिकल पेपर भी कर रहे हैं तो उसकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा वाइटल है. मैक्सिमम केस में मैंने देखा है कि स्टूडेंट को नॉलेज ही नहीं रहती और वो सिर्फ जर्नल एंट्रीज या बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर को याद कर रहे होते हैं. फॉर्मेट तो याद करना पड़ता है और कई बार आप करते करते उसे वो याद हो जाता है, ठीक है, लेकिन हर एक चीज़ को याद करने की ज़रूरत नहीं है अगर उसे आपने एक राइट कॉन्सेप्ट के साथ अंडरस्टैंडिंग की है. ठीक है, तो आज के सेशन में हम कवर अप करेंगे फॉरफीचर. Okay, forfeiture of shares. So we will discuss everything about the forfeiture. So what do you think, what is all about the forfeiture? So we learned that a company issues a share, invite the public, and public can buy the shares. So they become by applying, and once it allotted, they become a shareholder of that particular company. Okay, so there are a situation like we also learned in the past session that shareholder has been asked for different calls to make a payment. So I just want to give you a brief recall here. Application, that means the first time when shareholder apply for the shares of the company, and if these shares are allotted, it become the shareholder. So suppose the company need a first installment, after some time company want to meet some their requirement and they go for the allotment. Okay, then they might go for the first call, they might go for the second call, or it can be any, depends on the demands and requirements of the company. So whatever be the last call, we call it with the number and final call. Okay, so these are the part of installment which on behalf of a company a director will call to the shareholders to pay. Okay, but there might be a situation that out of 1,000 of shareholder, some may fails to pay, those might be allotment money or any of the call of them. Okay, so if they fail, these share which are failed can be forfeited. Yes, the forfeiture, what we can call it as a forfeiture of shares, is like a termination of the membership. It's a kind of some sort of penalty for non-payment of any of the calls made by the company or directors on behalf of the company. Hope you got it. Okay, so we learn about the basic meaning of the forfeiture of the shares. That means a cancellation of the membership of the shareholders, and we can see what those shareholder will be okay, bye bye. Okay, and this will be lead to a reduction in share capital. Okay, so what it give an effect to the company, what will affect so the defaulting shareholder lost all its right against these forfeited shares, and they definitely not being an continue to be the member of the company, hence they are ceases to be the member of the company. So the name of the and other detail of the shareholder should be removed from the registrar of the members, and the amount which is already paid, suppose they paid an application and fault in allotment. So whatever they paid on application, suppose they paid an application and allotment but failed to pay the first call, so whatever paid, already paid, has been forfeited, and their that shareholders once removed from the or ceases to be the member of the company, not entitled any kind of future dividends or any rights of the membership. Got it? So we learned about the meaning of forfeiture. Okay, you learn about the meaning of forfeiture. We also learn about its effect on shareholder and effect on company.
Okay, so kindly give me a moment to quickly conclude in another language. Okay, so forfeiture of share क्या होता है? हमने लास्ट सेशंस में ये देखा था कि भाई कंपनी जो है, अगर कोई जो एक पर्सन है, अगर उसे कंपनी के शेयर्स लेने हैं तो वो अप्लाई करते हैं। अप्लाई किए तो वो एप्लीकेशन का प्रोसीजर हो जाता है, और जब उन्हें शेयर अलॉट होते हैं तो अलॉटमेंट हो जाती है। उसके बाद कंपनी के बिहाफ में डायरेक्टर जब भी कंपनी को ज़रूरत होती है तो वो कॉल्स करते हैं और शेयर होल्डर्स को बोलते हैं आके पे करो। ठीक है, तो भाई मानिए फर्स्ट कॉल की अलॉटमेंट हुआ, सेकंड कॉल की फर्स्ट कॉल हुआ, फिर सेकंड कॉल हुआ, डिपेंड कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, जो भी लास्ट नंबर की कॉल होगी वो फाइनल कॉल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई बहुत सारे लोग शेयर होल्डर्स हो जाते हैं, लेकिन एक आध या कुछ ऐसे शेयर होल्डर होते हैं जो पेमेंट नहीं कर पाते हमारे कॉल्स की, यानी कंपनी जो कॉल्स करती है वो नहीं कर पाते पेमेंट, चाहे वो अलॉटमेंट हो, फर्स्ट कॉल हो या सेकंड कॉल हो, कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है, वो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा कि उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने क्या फेल किया है। अगर शेयर होल्डर फेल कर जाता है, पेमेंट नहीं करता है, तो उसके जो पहले की पूरी पेमेंट की होती है या उसके जो जो उसके नाम पे शेयर्स होते हैं उन्हें फॉरफीट किया जाता है। फॉरफीट यानी जब्त कर लेना। ठीक है, तो ये जो फॉरफीचर है शेयर का, ये एक तरीके से क्या है, कंपलसरी टर्मिनेट कर दिया जाएगा उसकी मेंबरशिप को, उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर की मेंबरशिप को हटा दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, क्योंकि उसने पेमेंट नहीं करी है। अब इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा? इफेक्ट एक तो वो जो शेयर होल्डर जिसने डिफॉल्ट किया है उसके सारे राइट्स जो हैं वो छीन लिए जाएंगे, वो सारे राइट उनके ले लिए जाएंगे, उनके शेयर्स को फॉरफीट कर दिया जाएगा, उनकी मेंबरशिप हट जाएगी, वो अब मेंबर नहीं रहेंगे कंपनी में, उनका नाम हट जाएगा जो है मेंबर्स के रजिस्ट्रार से। ठीक है, और जो भी उन्होंने अमाउंट पहले से ऑलरेडी पे करके रखी थी, जो भी अमाउंट होगी उन्हें फॉरफीट कर लिया जाएगा, यानी वो न फ्यूचर में डिविडेंड रिसीव कर पाएंगे और ना ही कोई उनके पास राइट रह जाता है उन पर्टिकुलर शेयर्स के प्रति। ठीक है, तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी हमारा कि फॉरफीचर क्या है। एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, एक ब्रीफ एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, ये रूल ऑफ थंब करके नहीं लिखना है, क्योंकि जितने बच्चे लेक्चर सुन रहे हैं सब एक ही एग्जाम्पल लिख लेंगे तो एग्जामिनर को पता लग जाएगा भाई कि ये अपना नॉलेज नहीं यूज़ कर रहे हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जहाँ पे भी मैंने कई बार एग्जाम्पल्स दिए हैं आप उसे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन लिखेंगे आप अपनी क्रिएटिविटी। ठीक है, अगर वो नहीं क्रिएट हो रही क्रिएटिविटी तो उसके लिए आप मुझे पूछ सकते हैं। So you can also mention the example. So suppose a company issues say 1 lakh shares, which is of we can call it at a, say company issues a 1 lakh shares. I'm just writing the figures or detail related things of rupees 10 each. Okay, so there might be something on application we can call as might be a rupees 2 on application. Okay, then we have an allotment, mark it as rupees 2 on allotment. Okay, then first call rupees 3 and second call say rupees 4. Okay, so sorry, rupees 3, 1 second, because I want to make it round off up to 10. Okay, rupees 3. So there might be some of you being a shareholder, you have been allotted 100 shares. Okay, but you fail to pay, say, first call and second call. You fail to pay your first call and second call, or it may be anything which is given in your question. So you fail to pay when the call has been made by the director of a company on behalf of the company. That means the calls has been made by the company. So in this case, the board of director now decided to forfeit your shares, your 100 shares, and then your membership will get cancelled, and whatever amount you have already been paid. Okay, so suppose you have paid 2 on application, 2 on allotment, so 4 rupees. Okay, you already paid and you have say 100 shares. So 100 shares into rupees 4 which you have already been paid, okay, now will be forfeited. Okay, so now you will be no longer being a member of the company. You have no right to the any dividend. You have no right to say anything to the company matters, and as your shares have been forfeited and you are no longer being a member of the company, it will definitely going to reduce the share capital of the company by this amount. Okay, by this amount. By what amount? By face value. This will reduce the capital, and forfeiture will be for 4 rupees which you have already paid. Hope you are getting.
Okay, so these things need to be mentioned in the article of association of the company, and it's also tell to the board of director that it's a time now call for the forfeiture, and now the board will like go with certain procedures to forfeit those share. So these forfeited shares should be shown into the balance sheet by way of like the amount has been forfeited that need to be added back to the paid up share capital on the liability side. Okay, until and unless these shares are reissued to somebody else. Okay, so I'm just talking about here on the forfeiture. In the reissue time we'll talk about reissue. Okay, so balance sheet, or we can call it as a disclosure. What we will do in the disclosure, we'll go on the liability side. Okay, we go into the liability side and we have a like shareholders fund, so we have an equity shares, so we have some paid up share capital, say whatever be the amount, add forfeiture. Okay, so whatever be the forfeiture amount will be added. Okay, again I want to redraw your attention that if these forfeited amount reissue, then it will not be added. Okay, so it is totally depends on the demand of the question. So this is all about the basic example. Give me a moment to quickly conclude in other language, then we will go with the accounting entries. मानिए एक कंपनी है जिसने 1 लाख शेयर इशू किए हैं, उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपए, 2 रुपए है एप्लीकेशन पे, 2 रुपए अलॉटमेंट, 3 रुपए फर्स्ट कॉल और 3 रुपए फाइनल कॉल. ठीक है, आप एक शेयर होल्डर हैं जिन्होंने 100 शेयर लिए थे उस कंपनी के लिए, लेकिन आपने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल मनी नहीं पे की, यानी आपने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट ऑलरेडी पे कर दी है. ठीक है, अब आपने ये पे कर दिया, लेकिन आप जब डायरेक्टर ने आपको बोला कि भाई और आके पे करो, तो आपने नहीं पे किया, आप फेल हो गए. ठीक है, ड्यू टाइम में आप फेल हो गए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया अब कि भाई अब आपके शेयर फॉरफीट कर लेने चाहिए. अब आपकी मेंबरशिप हट जाएगी, आप रजिस्ट्रार में लोन मेंबर नहीं रहेंगे, आपके पास कोई राइट्स नहीं रहेगा, आपको कोई से नहीं रहेगा एज अ मेंबर, आपको कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा. ठीक है, तो आपने जो अमाउंट ऑलरेडी पे की थी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट यानी 4 रुपए, और आपके जितने शेयर्स थे 100, तो 400 रुपए जो हैं वो आपके फॉरफीट कर लिए जाएंगे. ठीक है, 400 रुपए आपके फॉरफीट कर लिए जाएंगे. क्लियर है? उसके बाद ये हमारे शेयर कैपिटल पे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि अब आप मेरे मेंबर नहीं रहे, आप शेयर होल्डर नहीं रहे हमारी कंपनी के, तो जो इश्यूड कैपिटल है कंपनी की वो कम हो जाएगी आपके 1000 रुपए से. क्यों 1000 रुपए से? क्योंकि फेस वैल्यू 10 था. ठीक है, और भाई 4 रुपए तो मांग लिए, लेकिन अभी 6 रुपए बच रहे थे, लेकिन फेस वैल्यू से आपकी कैपिटल कम हो जाएगी. क्लियर? तो बैलेंस शीट में डिस्क्लोजर कैसे करेंगे भाई? लायबिलिटी साइड में आपका जो पेड अप कैपिटल होता है उसमें हम ऐड कर देंगे फॉरफीचर. क्यों कर रहे हैं ऐड? क्योंकि मैंने फॉरफीट करके वो अपने जेब में रख लिए 4 रुपए. ठीक है, और आपको शेयर होल्डर भी नहीं रहने दिया, इसलिए मैंने ऐड किया. अगर मैंने उसको फिर से रीइश्यू किया तब मैं ऐड नहीं करूंगी, लेकिन अभी मैंने सिर्फ फॉरफीट तक ला के रखी है बात. क्लियर है? सो आई होप आपको कॉन्सेप्चुअली चीजें क्लियर हो रही हो कि कहां पे हम ऐड कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं और क्या चीजें चल रही है. आई होप यू पीपल आर totally understanding the things and instead of memorizing. Okay, so try to understand here only. Okay, so just okay, go ahead with the situations. There are two situations. Okay, one the shares has been issued at par, or when the shares has been issued at premium. So I'll take two situation, because this is why because suppose you made a payment in of premium in the earlier period, or if you not paid, so we'll deal separately for the better understanding. Okay, so issue of shares at par. Clear? Issue of shares at premium. Clear? So these two situation. So first we will discuss the issue of shares at par. Okay, so in this case, what if we have some uncalled calls. Okay, and there also be a situation then these are transferred to the calls and arrear account or not transferred. So again we divide into two part. Transfer to calls in arrear account.
Okay, suppose there has been a error, that means you being a shareholder failed to make means you failed to suppose your first and second call. In our, suppose in this example, you failed to pay 6 rupees first call and second call, you failed it. Okay, so what you have did is, me being a company, what I did is I transferred your failed amount to the calls and error account. Okay, so calls and error account. Okay, so what the journal entry in that case? When you become my shareholder, okay, so recall the entry, I made a share application account debit to share capital. Hope you remember that, because if you memorize, you keep on recalling, and if you understood, you will get the things very quickly and very easily. Okay, now you become a shareholder, but now I am going to say you bye bye because you made a error, right? So you make something unpaid. So what journal entry in that case? Share capital account debit. I'll tell you with what amount, don't worry. To calls and error account. Okay, to calls and error account to share forfeited. Okay. There is no rule, whatever you can write up and down. There is no rule, but it's my humble request, a short trick. Like, always opt the same strategy, even in a practice or even at main examination. It's there will be a least chance of error in that case. Okay, so like if you are writing calls and error and first, so do that in first always. Okay, and share forfeited on the second side, so you can write. There is no rule, but it's my strategy. I'm telling you of the same strategy, even in practice and every time you do. Okay, so share capital, so this is with the all, means the total number of shares which has been forfeited plus called up value, whatever I called you. Okay, come and pay me. We will do the numerical, don't worry, here we are just understanding the thing. So in this share capital, so I called you to pay, I called you to pay. So whatever been a called up so far, that will be come to the share capital account. So the amount of called up value will be here. Okay, so we can mention that number of share forfeited into called up value. Why? Because I called you to pay that amount. Now, on when I called you, only that time I come to know that you won't able to pay that amount. Okay, so I called you to pay up. Okay, so but you failed to pay the first call and second call in our recent example. So the calls in arrear, because arrear means you lost something. Okay, so that is all include the unpaid calls, unpaid value. Hope you people satisfy and not memorizing anything. Okay, and share forfeited, what I'm forfeiting which you have already been paid. Okay, so you already paid those things, so amount already paid. Paid by you, I'm writing for you. Okay, so don't take it as you. Okay, so hope you are getting. Suppose you have there might be a situation that there are 2-3 shareholders and you pay. So in that case we'll do the working note and we'll do together. Okay, we'll do the numerical and you'll understand much more in detail form. Okay, so this is a situation when the amount has been transferred to the calls and arrear account. What if it's not being transferred to the calls and arrear account? So transfer to the call scenario and not transfer. Okay. So not transfer, I'm doing down because we have some space issue. Okay, here I'm doing, don't worry. Okay, not transfer to call scenario. So there might be a situation when you don't want to transfer it, or you don't think to transfer it into a call scenario account. Not to worry. What we do is, again, share capital account. Hope you can gather the information why we are doing it to the debit, because we are going to forfeit your shares now. So it's again with the share forfeiture, the number of shares, say in your case 100 shares, into called up value per shares. So share forfeit into called up value. ठीक है, called up value per share.
Okay. Now this time we didn't create any calls in error, and for what are is the error means you failed to pay whatever you failed to pay. Okay, so in our current example you failed to pay the first call and the second call. We'll just taking for the purpose of example, it can be anything as per the demand of question. To share first call account, to share say second and final call. Okay, amount failed. Okay, whatever the amount you fail to pay. So I already told you, try to practice the same way. So again, to share forfeiture, what you have already been paid, what you are forfeiting, which is already been paid by you, okay, being a shareholder. So amount already paid. Hope you are getting. So I think you people able to understand. Please never ever try to memorize the journal entry, because what I want you to understand the transaction being as a company. So when you think like a company, it's very easy for you to draw up the journal entry in this case. Okay, so kindly give me a moment quickly, then we will go with the premium stage. Okay. तो अब हम जो करने जा रहे हैं, हम दो सिचुएशन में डील करेंगे। एक या तो शेयर इश्यूज होते हैं पार पे या प्रीमियम पे, और शेयर इश्यूज अगर पार पे हो रहे हैं, ठीक है, और उसमें भी दो केस है कि अगर कोई आपने अरियर किया है एज अ शेयर होल्डर और आपने कॉल्स एंड अरियर में ट्रांसफर कर दी है, मतलब जो भी आपके अनपेड कॉल है, जैसे हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि आपने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल नहीं पे की है, तो वो आपने कॉल्स एंड अरियर के एक अकाउंट खोल दिया है और उसमें सेपरेटली ट्रांसफर कर दिया है। तो उस केस में क्या होगा भाई, आप जब शेयर होल्डर हमारे बन गए ना, तो आप जब भी पैसे देते थे वो हमारी शेयर कैपिटल हो जाती है, हमारी यानी कंपनी। लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो आप कंपनी होंगे, ठीक है। तो आपने जब पैसे दिए तो वो हमारी कैपिटल होती जा रही थी। अब क्या है, आपने कुछ डिफॉल्ट किया है, तो अब मुझे आपको बाय बाय करना है, अब आप मेरे मेंबर नहीं रह जाएंगे, तभी तो हम फॉरफीचर पे आ रहे हैं। तो अब वो कैपिटल चली गई, गई तो रिवर्स है, ठीक है, डेबिट हो जाएगी ना। अब तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट किससे, कॉल्ड अप से, आपके नंबर ऑफ शेयर, क्योंकि अब आपको ही बाय कर रहे हैं, मैं सारे शेयर होल्डर को थोड़ी नहीं बाय कर सकती, बाकी लोगों ने तो पेमेंट कर दी, आपको बाय करना है क्योंकि आपको मुझे बाय बाय बोलना है, क्योंकि आपने डिफॉल्ट किया है। तो आपके जितने भी शेयर होंगे, यानी जितने भी शेयर हम फॉरफीट करने वाले हैं, इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, जो भी मैंने कॉल करी है, जो भी मेरी कॉल्ड अप है, अब तक की कॉल्ड है, मैंने 8 रुपए कॉल करी होगी तो 8 रुपए होगी, मेरी 6 होगी तो 6 कॉल्ड अप होगी, 10 होगी तो 10 कॉल्ड अप होगी, जो भी कॉल्ड अप होगी, जो मैंने कॉल करके आपको बुलाया होगा देने के लिए, तभी तो पता चलेगा कितना दे चुके हो और कितना नहीं दोगे। क्लियर। तो अगर कॉल्स इन अरियर हो गया तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आपने कॉल्स इन अरियर, जो आपने अरियर कर दिया, अरियर यानी अभी नहीं पे किया, हमारे एग्जाम्पल में फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल आप नहीं पे कर रहे हो। क्लियर। तो वो कॉल्स एंड अरियर हो गया, तो कॉल्स एंड अरियर के लेजर में चला गया, डायरेक्टली अकाउंट में चला गया, और बाकी आपने फॉरफीट कर लिया। क्या करेंगे फॉरफीट, जो आपने ऑलरेडी दे दिया था ना, वो लेकर के हम अपने जेब में रखने वाले हैं, कंपनी फॉरफीट करेंगे। तो कौन सी चीजें फॉरफीट करेंगे, जो आपने ऑलरेडी पे कर दी है वो फॉरफीट होगी, जो आपने ऑलरेडी पे की है। तो जो भी अमाउंट आपने एज अ शेयर होल्डर पे की उसे हम फॉरफीट करेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स एंड अरियर, इसमें कोई भी सीक्वेंस आप ऊपर नीचे रख सकते। रूल ऑफ थंब एक बताऊंगी, जिस स्ट्रैटेजी में आप घर पे प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, वही आपको परमानेंटली एप्लीकेबल करनी होगी, ठीक है। ये रूल ऑफ थंब है, अप्लाई करके देखो, मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ कि हमने शेयर कैपिटल को डेबिट क्यों किया, क्रेडिट कॉल्स एंड अरियर को क्यों किया, क्रेडिट हमने शेयर फॉरफीचर को किया। उसे याद नहीं करेंगे प्लीज, आप अंडरस्टैंड करेंगे। सेकंड सिचुएशन है कि जब हम कॉल्स एंड अरियर अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर रहे, तब कैसे एंट्री होगी। फिर वही बात हो गई कि भाई हमारे आपका जो पोर्शन है शेयर कैपिटल का वो डेबिट हो जाएगा, कोई इसमें नहीं, कॉल्ड अप वैल्यू से। लेकिन अब हमने कॉल्स इन अरियर नहीं बनाया, अब जो अरियर हुआ है उसको सेपरेटली ट्रांसफर करेंगे, यानी हमारे इस एग्जांपल में हमने फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल को अरियर माना था। क्लियर है। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट
टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। जो भी आपकी फर्स्ट कॉल पे फेल होगी वो फर्स्ट कॉल में जाएगी, जो सेकंड कॉल में फेल होगी वो सेकंड कॉल में जाएगी, ठीक है। और आपने शेयर फॉरफीट करना है। क्या फॉरफीट करोगे? जो ऑलरेडी पे किया वही तो फॉरफीट करोगे, इसके लिए रटने की जरूरत नहीं। फॉरफीचर मीन्स जो आपने ऑलरेडी पे किया है उसे हम फॉरफीट कर लेंगे। आई होप आपको ये जर्नल एंट्री समझ में आई हो, उसे याद ना करें आप, ठीक है। So, okay, now let's move ahead with the premium things. Okay, so when the share are issued at premium, we will do the numerical, but I want you people to understand the thing holistically. So, issue of shares at the premium. In this also we have a two separate situation. Okay, when situation that the shares will be forfeited are which and these shares which is going to be forfeited are issued at premium, and premium money is unpaid. Okay, so two situation. So in first situation, premium, whatever be the premium amount, that premium amount is remain unpaid. Okay, that means the premium amount is not paid yet. Okay, so I'll mark it as with 3 star. Okay, so in this situation, premium amount which is unpaid, premium unpaid. Okay, I'm just writing as a head for your purpose of the understanding. So in such a case, what we have do, that we already, while issuing the shares, we already given to the security premium account, and now that need to be cancelled at the time of forfeiture. Okay, so to cancel that, what the entry we need to make, we have to reverse the security premium account. Okay, because when I issue the shares at premium, what I did, share application or share allotment, whatever it may be, to share capital, right, to securities premium account, right, and this is what we did. So now I need to reverse those entry. So you are no longer my shareholder, so share capital account debit, securities premium account debit. Okay, and I just taking in for this purpose that there is a calls and arrear account. Okay, to calls in arrear account to share forfeiture accounts. So share capital, it is all share capital will include the number of shares we are going to forfeit plus called up value. So forfeiture share into called up value per share. Okay, I'm writing just called up because of a space issue, and again with the securities premium, whatever the premium remaining unpaid. So unpaid premium on forfeiture share. Okay, whatever the shares I'm going to forfeit, the premium value on that forfeit shares. Okay, and with the share forfeited, it includes the amount of money which is already paid, because I'm going to forfeit whatever you have already paid. So already paid. Okay, that will I will forfeit, and failures. So hope you can recall now what is the call scenario. And we can also pass a journal entry that instead of call scenario, we can mark it as a first call and second call. Not a big deal. Okay, I hope you people can, for the purpose of convenience, I used it as a call scenario. So if it's not a call scenario account, then you can make it a share first call, share second call, and to share forfeiture. Hope it's okay. Okay, so there might be another situation when the forfeited share were issued at premium, and that premium money is already been received. Okay, so we have premium received. Premium received. Okay, so I'm marking with 1 star, and I'm okay. Premium received. So what will be the situation when the premium is already been received? So if the amount of premium on the shares forfeited already been received by the company, means prior to the forfeiture they already received that security premium account.
then it will be no effect on the security premium because it's already been received. So in this case, what we're going to do, that security premium is already been credited at the time of making the call. Okay, and now what, it will not be cancelled, and because the shares are going to be forfeiture. So what the forfeiture entry to be passed, it will be same as in the case of par. There is no nothing to be new because the premium is already been received. So no big deal, because it's already reverse entry na. So when you receive the premium, the story ends there. Share capital account debit, okay, with the called up value, okay, whatever be the number of shares we are going to forfeit plus called up value. Two, call scenario. Suppose we are making a call scenario account, or if not, the first call and second call, whatever may be situation with unpaid values or unpaid calls. Two, share forfeiture. So now amount which is already paid by you as a shareholder need to be as a share forfeiture account. So it will be same as of par. Okay. So I hope you people understand. Kindly give me a moment to quickly conclude in the other language. ठीक है, अब शेयर्स जो है प्रीमियम पे इशू हुए हैं, तो इसमें भी हमारी दो सिचुएशन हो सकती है कि एक तो जब शेयर्स इशू हुए हैं प्रीमियम पे, वो प्रीमियम के पैसे हमें मिले ही नहीं हो अभी तक, ठीक है, और वो प्रीमियम अमाउंट जो है ना वो अब तक अनपेड रह गए हो। तो भाई जब हमने ड्यू की थी कॉल, जब भी की होगी कॉल, तो हमें तो पहले ही पता है कि हम कॉल कर रहे हैं और उसमें प्रीमियम है, तब तो हमने प्रीमियम की अकाउंट बना ली, लेकिन अब हमें प्रीमियम मिला ही नहीं है तो कैंसिल भी तो करना पड़ेगा ना उसे। तो शेयर कैपिटल पहले जब हमने मानिए आपकी अलॉटमेंट के साथ थी तो क्या किया, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम किया था। अब आप मेरे शेयर होल्डर नहीं रह गए, हमारी शेयर कैपिटल को कम करेंगे तो प्रीमियम को भी तो कम करेंगे ना, क्योंकि वो प्रीमियम आपको देना था वो अभी दिया नहीं है। एंट्री आपने खड़ी तो कर दी, ड्यू की एंट्री तो पास कर दी, अब कैंसिल भी तो करना पड़ेगा क्योंकि फॉरफीट कर रहे हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर टू कॉल सिनेरियो। ये क्लियर है आपको? कुछ याद नहीं करना है, अंडरस्टैंड करेंगे। तो जो भी शेयर कैपिटल आपको देना था, कॉल्ड अप था, उससे डेबिट होगा, प्रीमियम अमाउंट से डेबिट होगा जो कि अभी नहीं पे है ना। उसके बाद जो फॉरफीट, जो आपकी अमाउंट ऑलरेडी पे की है उसे हम फॉरफीट कर लेंगे, अपने पास रख लेंगे, और कॉल्स एंड अरियर जो आपकी अरियर हो रही है। क्लियर है? अगर यहीं पे कॉल्स एंड अरियर नहीं अकाउंट बन रहा तो वही आप कर देंगे शेयर फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल, जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर? कोई डाउट्स नहीं। सेकंड सिचुएशन ये हो सकती है कि भाई आपका प्रीमियम जो है वो फॉरफीचर से पहले ही आपने पेमेंट कर दिया है, यानी अरियर नहीं हुआ है। आप जो कंपनी है, हम जो हैं, हम जो फॉरफीचर करने जा रहे हैं, हमने जो शेयर्स आपको प्रीमियम पे इशू किए थे, प्रीमियम हमने रिसीव कर लिया है, यानी आपने मानिए एप्लीकेशन या अलॉटमेंट में ही प्रीमियम दे दिया है, ठीक है, और उसके बाद फॉरफीचर हो रहा है। तो हमने जब प्रीमियम आपका रेज किया था शेयर अलॉटमेंट के टाइम में मानिए, तो हमने ड्यू किया और आपने पेमेंट भी कर दी अलॉटमेंट की, तो रिसीव भी हो गई, डेबिट क्रेडिट हो गया, चैप्टर क्लोज, है ना। पैसे तो मिल गए प्रीमियम के, सिक्योरिटी प्रीमियम के। तो अब कॉल्स में तो कोई प्रीमियम था नहीं, तो अब इससे क्या होगा भाई, हमने ऑलरेडी जो है प्रीमियम रिसीव कर लिया और अब हम जो है फॉरफीचर करने जा रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है ना हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम कॉल्स के टाइम में, और अब तो वो कैंसिल होगा नहीं, ठीक है। तो अब क्या होगा, जस्ट सेम जो हमारी पार की एंट्री थी, जनरल एंट्री, हमें वही एंट्री पास करनी है। क्यों? क्योंकि प्रीमियम तो ऑलरेडी मिल चुका है, ऑलरेडी रिवर्सल हो चुका है, तो हम वो थोड़ी नहीं दोबारा आपसे मांगने आएंगे, उसको थोड़ी नहीं वो करेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आपका कॉल सिनेरियो टू शेयर फॉरफीचर। शेयर कैपिटल में आपकी वही सेम अमाउंट कॉल्ड अप वैल्यू कॉल की थी जो, इनटू आपके जो शेयर हम फॉरफीट करेंगे, टू शेयर फॉरफीचर। फॉरफीट क्या करते हैं, जो आपने ऑलरेडी दे दिया उसे अपने जेब में रखना है। कॉल्स एंड अरियर जो आपने अरियर कर रहा है, यानी जो अनपेड आपकी कॉल्स है। अगर आपने कॉल्स एंड अरियर अकाउंट नहीं खोलेंगे तो शेयर फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल जो भी आपकी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी वो मेंशन हो जाएगी। आई होप आपको क्लियर हो चुका हो। आपका जो फॉरफीचर का हमने डिस्कशन किया कि शेयर्स जो हैं फॉरफीट हो रहे हैं या शेयर फॉरफीचर क्या होता है, ठीक है। तो हमने कौन कौन से पॉइंट डिस्कस किए, क्विकली रिकॉल करते हैं। हमने कॉल्स को समझा, रिकॉल किया, हमने मीनिंग समझी, उसका इफेक्ट समझा शेयर होल्डर और कंपनी पे, ठीक है, और बैलेंस शीट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, और जनरल एंट्री दो सिचुएशन में समझी।
पार एंड प्रीमियम पे। पार में भी हमने जब ये समझा कि जब कॉल्स एंड अरेयर अकाउंट खुलेगा या कॉल्स एंड अरेयर अकाउंट नहीं खुलेगा, और प्रीमियम के पैसे मिल चुके हैं या प्रीमियम के पैसे नहीं मिले। ऐसे क्विकली आप रिकॉल करेंगे, अपने इस कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करके रिवाइज करेंगे, न्यूमेरिकल के साथ, नंबर्स के साथ, फिगर्स के साथ हम इसको और डिटेल में जो है कवरेज करेंगे। तब थोड़ा बहुत अगर कोई आपको अंडरस्टैंडिंग में लैकिंग होगी तो आप उन सेशंस के थ्रू इसे कवर अप कर पाएंगे। थ्योरीज को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आप जर्नल एंट्रीज हो या कोई भी एंट्रीज हो उसे सिर्फ याद करते हैं, और अब यहाँ पे जुड़ने के बाद आपको कोई भी चीज़ याद नहीं करनी है, उन्हें अंडरस्टैंड करनी है। जब आप कंपनी का क्वेश्चन कर रहे हैं तो थिंक लाइक अ कंपनी, व्हेन यू आर सॉल्विंग लाइक अ इंडिविजुअल, सॉल्व लाइक अ इंडिविजुअल। सो नाउ इट्स अ टाइम, stop memorizing the thing, because commerce and accountancy is all about money, and money will run and walk with you, beside you till your last breath, है ना। आप अर्निंग करोगे तो एक्सपेंस की मैनेजमेंट हो, फाइनेंशियल प्लानिंग हो, सब जगह पे मनी का बहुत ही वाइटल रोल होता है। तो ये कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी एक ऐसा फील्ड है ना जो लास्ट ब्रेथ तक आपके साथ चलता है, तो इसे अंडरस्टैंड कर ले तो बेटर होगा, ठीक है। सो आई होप आई हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। सो कीप रिवाइजिंग and stay connected. See you in the next session more on commerce and accountancy. Till then, take care, bye bye, and Jai Hind.